Hi friends, and thanks for connecting for today's Qcard video. The Qcard is talk about a rule that you like to follow. IELTS में रूल्स रिलेटेड क्यू कार्ड्स हमेशा रहते हैं. अ रूल यू डिड नॉट लाइक या रूल इन योर स्कूल डेज यू हैड टू फॉलो. यहाँ पे अ रूल दैट हैज़ इम्प्रेस्ड यू अ लॉट. एक रूल दैट यू वुड लाइक टू बी इनएक्टेड, मतलब ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए. और अभी नया क्यू कार्ड जो आपसे पूछा जा सकता है, टॉक अबाउट अ रूल दैट यू लाइक टू फॉलो. ऐसे कितने ही रूल्स हैं जो हम डे इन डे आउट फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा प्रैक्टिकल सा हम इस क्यू कार्ड में बोलने जा रहे हैं जिसको हम जस्टिफाई करेंगे कि ये एक ऐसा रूल है जो मुझे खुद फॉलो करना बहुत पसंद है. और इसकी सिंप्लिसिटी को ध्यान में रखते हुए मैंने चूज किया है नॉट टू लिटर एट पब्लिक प्लेसेस. हम जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज अमंग वन ऑफ द डर्टीएस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पर लोग बिल्कुल भी केयरफुल नहीं है टूवर्ड्स देयर सराउंडिंग्स, और जिसका जहाँ पे मन होता है वहीं पे गंदगी डाल देता है. बसेस में बैठ के देखिएगा, इस टाइम पे मूंगफली से भरी रहती हैं, और कितना आप देखते हैं कि प्लास्टिक बॉटल्स, रैपर्स हर एक ऐसी जगह पे आपको नज़र आते हैं. तो क्वेश्चन ये है कि आपको ये पसंद क्यों है? क्योंकि आप बहुत ही सफाई पसंद पर्सन है, चाहे नहीं भी हैं बोल देना. आप घर पे भी हमेशा सफाई रखते हो, तो जब आप बाहर जाते हो तो उसे भी अपना घर समझते हुए उसकी सफाई आप इंश्योर करते हैं. आप पब्लिक पार्क्स में जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो कभी भी आप लिटर नहीं करते हैं. इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि मैं अपने बैग में जब भी जाता हूँ तो एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग रखता हूँ, ताकि इन केस अगर मैं कुछ खाऊँ या ऐसा कुछ वेस्ट हो, आई डू नॉट लिटर. मैं उस प्लास्टिक बैग में उसे रख लेता हूँ, और वेन एवर पॉसिबल जहाँ पर भी मुझे डस्टबिन नज़र आता है तो मैं उसे वहाँ पर डंप कर देता हूँ. इनफैक्ट हम ये भी कहेंगे कि आई डोंट हेजिटेट कि अगर मैं कहीं पार्क वगैरह में जा रहा हूँ और वहाँ पर मुझे नज़र आता है कि उसकी ब्यूटी रुइन कर रहा है कुछ, वहाँ पे प्लास्टिक का कोई बैग पड़ा हुआ है, प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल पड़ी हुई है, एल्युमिनियम कैंस पड़े हुए हैं, तो मैं उनको भी उठा के डस्टबिन में डाल देता हूँ. रादर इससे दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलते हैं, या कई बार जो लोगों ने फेंका होता है मैं उनके सामने जब उठाता हूं तो उनको थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी फील होती है. सो दिस इज जस्ट हम और लंबा करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स को भी जस्टिफाई कर सकते हैं. दैट स्वच्छ भारत अभियान जो गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव है, उसके अंडर भी मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक इंडिविजुअल है ये काम करे और अपना कंट्रीब्यूशन दे टूवर्ड्स क्लीनिंग द कंट्री. एंड इतना अगर बोलेंगे तो मेरे हिसाब से तो बड़े आराम से 1 से 2 मिनट की टॉक पर पैर हो जाएगी. तो ये देखते हैं इसका एक सिंपल लैंग्वेज में येट इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव सैंपल आंसर कैसा होगा. Well, there are hundreds of rules that we have to follow, and most of the time we do not feel like following them, but it's more like a compulsion. Here I would like to talk about one rule which I follow wholeheartedly and I like it the most, and this particular rule is of not to litter at public places. It's quite unfortunate that my country, India, is one of the dirtiest countries of the world, and it's not actually the country is dirty, but people are very careless toward maintaining cleanliness, especially when it comes to public places. Whenever they visit any public place, for example parks, garden, or they use public transport, they do not hesitate to throw the waste wherever they wish. It's not uncommon to see empty plastic bottles, aluminum cans, chips bags here and there, and it justifies that people are not following this rule at all. But I always try to follow it, and for this reason whenever I travel or visit any public place, I always keep a plastic bag with me. This is to ensure that I do not have to litter if I eat a candy or
have a cold drink, I keep the waste in that plastic bag, and whenever possible or I see a dustbin around, I dump it properly. In fact, if I'm at a public park and I see an empty can or plastic bag, I don't hesitate to pick it and dispose it properly. Sometimes I see people are so careless, they just throw wherever they wish to, and I intentionally pick the waste right in front of them and dispose it properly, which often embarrasses them as well. The government of India is doing a lot to make India clean, and I think that it is the duty of each and every Indian to play its part. This is the reason why I always try to keep my surroundings clean. In fact, there is an NGO in my city that run campaigns regarding cleanliness, and I always participate as a volunteer. I must say that if somebody does not follow this rule at public place, he or she has to pay a penalty of 1000 rupees, but it is not strictly implemented at all. That's the reason why we don't see anyone following this rule. So I would really love to see if government strictly apply this rule in future, and people too become responsible towards it, and just like me, like this rule and follow it wholeheartedly. And that's it. I think it's a very simple answer जिसे आपने follow किया, and as usual for the written version of all the latest cue cards आप unlock कर सकते हैं IELTS Speaking Booster। ध्यान से देखें इन 5 steps को कि आप क्या करें कि अगले 30 सेकंड में IELTS Speaking Booster आपके पास unlock हो जाए। आज की वीडियो में इतने, जल्दी मिलेंगे।